We can start, Dr. Sikandar. Okay, thank you very much. For next few minutes, I will talk about high frequency ventilation. I'm very happy to listen Dr. Junesa. He has taught you about nasal high frequency ventilation. So I will talk about high frequency oscillatory ventilation, inshallah. So outline of my talk is what is high frequency and what are its types? What is high frequency oscillatory ventilation? How it is compared with conventional mechanical ventilation? What are its advantages and disadvantages? How it works? What are indications and contraindication? How to use high frequency and some of complications. So basically, high frequency ventilation is type of mechanical ventilation with the use of low tidal volume, and as the name suggests, with high breathing rate. And it is most of the time more than 150 breaths per minute. And its basic objective is to keep the lungs open and to prevent collapse between the breaths. So types of high frequency ventilation, the most commonly used, especially in our setup, is high frequency oscillatory ventilation. But there are some certain other types of high frequency ventilation, like high frequency jet ventilation, high frequency flow interrupters. We will just focus on the oscillatory ventilation. So what is high frequency oscillatory ventilation? It is a method of mechanical ventilation using rapid breathing rates up to 900, sometimes more than this, breaths per minute. We use usually in high frequency oscillatory ventilation, the term is hertz, which is 3 to 15 hertz is the range, with the very low tidal volume, which is almost up to the dead space volume, starting from 0.1 to 5 ml per kg. And it uses the constant descending pressure with pressure oscillation around the mean pressure. And it is alternative to conventional ventilation in the treatment of type 2 respiratory failure. If we compare between the conventional mechanical ventilation versus high frequency oscillatory ventilation, the most frequent difference is the rate. As you know, and in the last lecture, you have heard that usually we set the frequency between 30 to 60 in conventional ventilation, while in high frequency oscillatory ventilation, we can use 3 to 15 and sometimes more than that. That means from 180 to 900 breaths per minute. With a very low tidal volume, as in conventional mechanical ventilation, we use tidal volume between 5 to 7 ml per kg, but in high frequency, we use 0.1 to 2 ml per kg. Usually in conventional ventilation, inspiration is active while expiration is passive. While in high frequency oscillatory ventilation, both inspiration and expiration are active. If we talk about the advantages of high frequency oscillatory ventilation, the most important advantage is that it plays within this safe window, that it avoids the zone of de-recruitment and atelectasis. Similarly, it also avoids the zone of overdistension. So it reduces the ventilatory associated lung injury. Due to less volutrauma and less atelectotrauma, less biotrauma, less rheotrauma, less barotrauma, and less requirement of supplemental oxygen. Another important advantage is it has uniform lung inflation. When we use the high frequency oscillatory ventilation, we use uniform lung inflation. Ultimately, there is better gas exchange and it allows severe pulmonary air leaks to heal. So it allows the time at which
the pulmonary air leaks have the time to become healed. And this is a safer way to use the super PEEP. But it has some disadvantages, like it has the potential for gas trapping and inadvertent PEEP. And it is difficult to determine the optimal lung volume, for which we need help from chest X-ray to detect the overinflation and obviously underinflation. Some terminologies are used in high frequency oscillatory ventilation are frequency. We use frequency in high frequency rather than respiratory rate. And it is usually determined in units of hertz. In high frequency ventilation, we use MAP, which is the mean airway pressure in centimeters of water. And we use amplitude in high frequency, or sometimes in some ventilators, it is called as delta P, or in some ventilators, it is called as power, which is a variation around the mean airway pressure. We use fraction of oxygen like FiO2 and IE ratio. So what is the understanding, how it works? Actually, we usually set a mean airway pressure. When we set the mean airway pressure, तो होता इस तरह है कि हम mean airway pressure को set कर देते हैं और alveoli एक certain level पे आके distend हो जाते हैं और उसके ऊपर हम set करते हैं delta P और amplitude, this is the delta P, which is actually the variation around this mean airway pressure. We usually set at constant mean airway pressure that the alveoli, and then we allow the variation in the form of delta P around this map. And this is the TI and expiratory time. And as I've said that in high frequency oscillatory ventilation, both inspiration and expiration are active. Say, for example, in a 1 kg baby, the minute volume is 300 ml. Volume offered by 10 alveoli, each with 1 ml capacity. If we have 10 alveoli, as you can see here, if we have 10 alveoli, each alveoli contains 1 ml, and the minute volume जो कि हमें चाहिए minute volume एक 1 kg के बच्चे के लिए is 300 ml. तो 10 alveoli कितना volume एक टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं, which is 10 ml. तो कितने ब्रेथ्स हमें चाहिए होंगे for 1 kg baby to adjust this 300 ml minute volume? To exchange the minute, to exchange 300 ml of air with 10 alveoli, each alveoli containing 1 ml, we need a rate of 30 breaths per minute. क्या ये वाला 30 breaths per minute हमारे लिए conventional ventilation पे possible है? Yes, it is possible. लेकिन जो कि पहले भी कुछ आपकी जो वेंटिलेशन की टॉक्स हुई हैं, उसमें आपको बताया गया होगा कि हम जो बच्चे डील कर रहे हैं वो न्यूबॉर्न्स हैं, स्पेशली प्री टर्म्स और स्पेशली एक्सट्रीमली प्री टर्म्स. वहां पे हमारा क्या प्रॉब्लम है कि वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ एल्वोलाई. तो इसके लिए हमें फिर क्या ऑप्शन चाहिए होगी, क्योंकि 30 का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कन्वेंशनल वेंटिलेशन पे हम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि 1 kg के बच्चे के लिए वी नीड 300 ml मिनट वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास अब एल्वोलाई अगर सिर्फ 1 है, एक एल्वोलाई है, और वो एक एल्वोलाई
सिर्फ 1 ml को अकोमोडेट कर सकते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 ml है। तो अब जरा सोचिए कि इस एक एल्वेलाई को 300 ml का मिनट वॉल्यूम एक्सचेंज जो उसका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कितने ब्रेथ चाहिए होंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। Here you can see for a 1 kg baby who needs minute volume of 0.3 liters, who has 1 alveoli that can only offer 1 ml capacity. So हमें उसके लिए breaths per minute which is required is 300 breaths per minute. That is not possible for conventional ventilation. So here comes the need of high frequency oscillatory ventilation. High frequency oscillatory ventilation uses high mean airway pressure. That is required to distend the alveoli. That is required to recruit the alveoli, which is the need of opening and distending the closed alveoli, which is called recruitment of alveoli. When we use high map, जो आपके बंद alveoli होते हैं वो भी open हो जाते हैं, which is called recruitment of alveoli. Here we use tidal volume, which is near to the dead space volume. Here we use high breathing rate with an active inspiration and expiration. So what is the indication? Indication is rescue following failure of conventional ventilation. The straightforward indication is कि जब आपकी conventional ventilation fail हो जाए, then you can use the high frequency oscillatory ventilation. Then in certain conditions like air leak syndromes, pneumothorax, pulmonary interstitial emphysema, where you can directly use high frequency ventilation. जैसे कि मैंने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी का रोल खास तौर पे वहां पे उभरता है जहां पर आपके पास लो लंग वॉल्यूम है. So if you have hypoplastic lungs, if you have diaphragmatic hernia in which your intestinal content has occupied the space of your lungs and alveoli and reduced the lung space, here you can use the high frequency ventilation. You can use it in persistent pulmonary hypertension and meconium aspiration, especially in primary pulmonary hypertension, which is responsible to reversal of fatty lactases and controlled alkalosis. But there are some certain contraindications, especially where airway disease associated with gas trapping and airway obstruction. Whenever there is obstruction to the airway, you cannot use high frequency oscillatory ventilation. Therefore, when you use high frequency ventilation, you have to prevent the airway obstruction, like you have to prevent the obstruction due to your excessive secretion. For that needs to gentle and vigilant suctioning too, without breaking the circuit of high frequency ventilation. If your baby is uncorrected shock, if your baby is in shock, you cannot use high frequency until and unless you will treat the shock. So how do we set high frequency ventilation? There are two strategies. One is low volume strategy. When you have the condition of when there is low lung volume, the aim there is to minimize the lung trauma. We will use the low volume strategy where we set the low volumes, especially in condition where is there are conditions of pneumothorax and pulmonary interstitial emphysema. We use the low lung volumes in these settings. And here MAP is equal to the MAP which was set on conventional ventilation. That means कि जब हम conventional ventilation से shift होंगे high frequency ventilation पे, हम वही वाला MAP set करेंगे जो कि आपने conventional ventilation पे set किया है. हम उसमें add on नहीं करेंगे. This is called low lung volume strategy.
Next is the optimal lung volume strategy. Here is the aim to maximize the recruitment of alveoli. Here is low lung volumes conditions where we need optimum lung volume strategy. Here we will set the map which is 2 to 3 centimeters, that is above the map which was set on the conventional mechanical ventilation. And we will increase the map in 1 to 2 centimeter of water steps every 10 to 20 minutes until the oxygenation is improved. So one parameter in high frequency is map. We will set in optimal lung volume strategy where we have to maximize the recruitment of alveoli. We will set map which is 2 centimeter above the map which was set on the CMB. और एक जब हम इसको ऊपर यानी कि एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे तो 1 to 2 centimeter of water से लेके जाएंगे. जो next parameter है that is frequency. Initially we will set the frequency usually at 8 to 10 hertz. Next parameter is delta P, which is also called amplitude. और amplitude जो हम set करते हैं to get an adequate chest wall vibration. यहाँ पे हम बच्चे के level of chest पे sideways जाते हैं और ये देखते हैं जहां हमें adequate chest wall bounce मिल रहा है, vibration मिल रही है, वहां पे हम set कर देते हैं delta P को. ठीक है? Next is the FiO2. Usually we will set FiO2 at 40%. And I ratio in our setup, we usually set at 1:1. So basically, जो कि conventional mechanical ventilation में हमारे पास बहुत ज़्यादा parameter हैं. In high frequency, it is much simpler than conventional mechanical ventilation. We have map, we have frequency, we have delta P, and we have FiO2. Then is I ratio. और in next few slides आप देखेंगे कि इसमें से ज़्यादातर आपको parameters, half of the parameters को आपको बहुत ज़्यादा touch ही नहीं करना पड़ता. तो usually 2 parameters आप select करते हैं और उसी को up and down करते हैं. So it is much easier than conventional mechanical ventilation, but it need vigilance. ये नहीं हो सकता कि आप एक बच्चे को high frequency पे डालें और आप जाके अपने रूम में बैठ जाएं. That is not possible. It need vigilance because आप बहुत high frequency set कर रहे हैं, breath rates per minute set कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से changes आती हैं और उसके लिए आपको बच्चे के बेड साइड पे रहना चाहिए. हम मॉनिटर कैसे करेंगे? यूजुअली जब भी वेंटिलेशन करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लड गैसेस. अगर आपके पास ब्लड गैस की फैसिलिटी नहीं है आपके यूनिट के अंदर, आपको वेंटिलेशन नहीं करनी चाहिए. ऑब्वियसली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी इज चेस्ट एक्स-रे व्हिच वी नीड. सो एबीजीज फर्स्ट in 30 to 60 minutes हम जो पहली ब्लड गैस कराएंगे आफ्टर पुटिंग द बेबी ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, हम बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे. विद इन 30 मिनट्स हम उसकी ब्लड गैस कर लेंगे और उसके बाद 30 मिनट्स टू 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी लेटेस्ट ब्लड गैस होगी. और देन इज एक्यूट चेंज इन पेशेंट कंडीशन. एबीजीज आर इंडिकेटेड इन दीज 3 कंडीशन. एक्स-रे, चेस्ट एक्स-रे वी विल डू इनिशियली एट 1 to 2 आवर्स और जो इसमें हमें बेसलाइन लंग वॉल्यूम चाहिए दैट इज 7 to 8 ट्रिप्स. खास तौर पे हमने ओवर डिस्टेंशन दैट मींस नॉट मोर देन 9 ट्रिप्स, हमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड फॉलो अप एक्स-रे विल बी डन इन 4 to 6 आवर्स. एंड वी हैव, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने ओवर डिस्टेंशन को खास तौर पे देखना है. एंड ऑब्वियसली चेस्ट एक्स-रे इज इंडिकेटेड व्हेनेवर देयर आर सम एक्यूट चेंजेस इन पेशेंट. The important thing is कि कैसे CO2 को कंट्रोल करना. हमारे पास 2 ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, CO2. अगर चेंज CO2 में रिक्वायर्ड है तो हमने क्या करना है और ऑक्सीजन में रिक्वायर्ड है तो क्या करना है. तो फर्स्ट द टारगेट PCO2 इज 35 to 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. यूजुअली हम हायर एंड पे रखते हैं. सो मोस्ट फॉर कंट्रोलिंग द CO2 इज एम्पलीट्यूड और डेल्टा. Amplitude and delta. Second one is the frequency.
ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो CO2 को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी है हम इसको 8 to 10 पे लाके रोक देते हैं और बहुत कम इसका यूज करने की जरूरत पड़ती है। और जब भी आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो खास तौर पे कंसल्टेंट को जरूर इन्वॉल्व। सो वी विल लेफ्ट विद वन पैरामीटर दैट इज डेल्टा पी और एम्पलीट्यूड। सो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, जब हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे दैट विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलरली वाइस वर्सा। सो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस द CO। और यूजुअली हम जो चेंज करते हैं बाय 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से अप एंड डाउन करते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली हम कम चेंज करते हैं क्योंकि खास तौर पे इसमें देयर इज सम अदर इफेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि कन्वेंशनल वेंटिलेशन में हम जब ब्रेथ रेट को इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है CO2। तो हम अगर ब्रेथ रेट को बढ़ाते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। व्हाट डू यू थिंक इन हाई फ्रीक्वेंसी? If we increase the frequency, that will actually increases the carbon dioxide. That will actually increases the carbon dioxide. तो आपको ये सोचना चाहिए कि why this happens. It happens because there is less time for the gas exchange. So इसलिए frequency usually हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। यूजुअली हम डेल्टा पी या एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। अगर डेल्टा पी को आप बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, कम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। और हमें फ्रीक्वेंसी ओनली तब चेंज करनी है जबकि डेल्टा पी उसकी लिमिट पे आ जाए। सो नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन। सो हमारी जो टारगेट सैचुरेशन है विच इज 90 to 95, here again we have only two parameters to control the oxygen. First is FiO2, similarly as in conventional and in non-invasive ventilation. Increase in FiO2 improves oxygenation और usually हम by 5 इसको चेंज करते हैं। और आमतौर पे जब हम हाई फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं तो यूजुअली आप FiO2 भी अपने लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं विच इज ऑलमोस्ट 60%। इसका मतलब है कि देयर इज नॉट मच रोल ऑफ FiO2। वी विल लेफ्ट ओनली विद MAB। हाउ MAB बिहेव्स व्हेन वी इंक्रीज द MAB, एक्चुअली ऑक्सीजनेशन इंप्रूव्स। यानी कि अगर आप MAB बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन भी बढ़ती है, MAB कम करते हैं तो ऑक्सीजन भी कम होती है। और यूजुअली हम MAB को किस तरह चेंज करते हैं? अप एंड डाउन कैसे जाएंगे? बाय 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इफ वी लुक, अगर आप गौर करें, हमारे पास प्रैक्टिकली जो हमने प्ले करने हैं वो दो पैरामीटर्स। अगर FiO2 लिमिट पे आ गई है तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कौन सा पैरामीटर है? MAB। और अगर आप इधर CO2 के ऊपर देखें तो यूजुअली हम फ्रीक्वेंसी जब तक डेल्टा पी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचता नहीं चेंज करते। तो यहां पे आपको CO2 को मैनिपुलेट करने के लिए कौन सा पैरामीटर है? डेल्टा पी। और प्रैक्टिकली डेल्टा पी आपको। तो इधर आप देखें कि एज कंपेयर टू कन्वेंशनल वेंटिलेशन, ये जो हवा है हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन का, इट इज मच इजियर एंड सिंपलर। लेकिन क्या डिफरेंस खास तौर पे, ऑल्दो कि विजिलेंस आपकी CMV पे भी चाहिए, लेकिन यहां पे आपको एक्सट्रीम विजिलेंस चाहिए। यू हैव टू सिट विद द पेशेंट एट द बेड साइड। विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। दैट्स क्लियर। अब बारी आती है वीनिंग की। तो वीनिंग हम कैसे करेंगे? फर्स्ट रिड्यूस FiO2 बाय 5, 40% तक आ जाए। देन रिड्यूस द MAB। हम MAB, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम करेंगे। और कहां तक आ जाएंगे? 9 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देन वी विल रिड्यूस द डेल्टा पी बाय 4 और यूजुअली 20 to 25 तक आ जाएंगे
approximately. Frequency generally remains unchanged. जब आप ये बेसलाइन वैल्यूज पर आ जाएंगे और क्या देखेंगे, ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज. अगर इन लो सेटिंग्स पे बेबी गैस एक्सचेंज अपनी मेंटेन कर रहा है और इंप्रूव कर रहा है लंग्स भी उसके, तो आप किस पे स्विच हो सकते हैं? यू कैन स्विच डाउन टू सीएमबी. यू कैन स्विच डाउन टू सीएमबी. लेकिन फिर क्या ख्याल करेंगे कि जिस तरह ऑप्टिमल लंग स्ट्रैटेजी आपने यूज की थी, तो वहां पे जब सीएमबी से हाई फ्रीक्वेंसी पे आप आए थे तो आपने 2 मैप को इंक्रीज किया था. तो अब आप एचएफओ से डाउनवर्ड सीएमबी पे आएंगे तो यहाँ पे जो एचएफओ पे मैप होगा उससे 2 माइनस करके नीचे आ. इज दैट क्लियर? So there are some complication in case of excessive lung volume. जब भी ओवर डिस्टेंड करेगा तो एक्चुअली जब आपका प्रेशर आपका मेडिस्टाइनम पे जाएगा, आपकी लार्ज वेसल्स में जाएगा, वीनस रिटर्न कम होगा, that will lead to hypoxemia and ultimately hypotension. There are chances of mucostasis. इसलिए मैंने आपको कहा without breaking the आपको चैनल आप इनलाइन सक्शन कर सकते हैं, जेंटल एंड विजिलेंट सक्शन की जरूरत होगी इसमें. अब किस तरह अप्रोच कैसे करना है इसको? सो हाई फ्रीक्वेंसी कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ सीएमबी या सम कंडीशंस लाइक एयरलिक सिंड्रोम्स, हाइपोप्लास्टिक लंग, पीपीएच एंड डायफ्रेगमेटिक हर्निया. इनमें आप एचएफओ पे जाएंगे. यू हैव स्टार्टेड द एचएफओ. क्या करेंगे? विदिन 30 मिनट्स यू विल गेट द ब्लड गैस. अब ब्लड गैस में क्या है कि ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर ऑफ जो PO2 है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा है. आपकी सैचुरेशन जो बता रही है 90 to 95 के दरमियान है. CO2 लेस देन 60 है और इंप्रूव कर रही है. तो क्या करेंगे आप? यू विल ग्रेजुअली वीन. फर्स्ट FiO2 40% तक आ जाए. मैप 1 to 2 सेंटीमीटर कम करते हुए 9 to 10 पे आ जाए. डेल्टा पी जो कि अभी हमने सारी बातें डिस्कस की हैं 20 to 25, और देन यू विल स्विच टू सीएम. दिस इज एट लार्ज द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन की जो अप्रोच है वो ये. अच्छा, उसके बाद आ जाता है दूसरे एंड पे कि आपने ब्लड गैस की. ब्लड गैस पे PO2 लेस देन 60 है, CO2 बढ़ रही है और ज्यादा है, मोर देन 60 है, और सैचुरेशन भी 90% आ रहा है. तो क्या करेंगे आप? You will increase the setting according to blood gas, and then फिर आप blood gas देखेंगे. अगर वो improve कर रही है, you will actually gradually wean off to CM. Again, after increasing the setting, अगर blood gas still improve नहीं कर रही, ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, then क्या करेंगे? और आप इसकी maximum setting तक चले गए HFO में, तो ये आप यहाँ पे रेस्क्यू और हाइब्रिड वेंटिलेशन यूज करें. तो रेस्क्यू वेंटिलेशन हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक जनरल अप्रोच है कि व्हेनेवर जब हाई फ्रीक्वेंसी पे आप डालते हैं, जो आपकी इंडिकेशंस है उसके अकॉर्डिंगली विदिन 30 to 60 मिनट्स आप ब्लड गैस देखेंगे. अगर इंप्रूव करिए तो वीन ऑफ करेंगे, स्विच कर लेंगे सीएमबी. लेकिन ऑन द अगेंस्ट अगर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी पे डाला, ऑक्सीजन आपकी ब्लड गैस इंप्रूव नहीं कर रही, डिटीरियरेट कर रही है, आप सेटिंग्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे. और अगर इंप्रूव नहीं आएंगे तो इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ रेस्क्यू वेंटिलेशन तो आप उस पर स्विच करें. अब इसको समझते हैं फ्यू सिनेरियोस के साथ. जस्ट लाइक एक बेबी है जिसको आपने सीएमवी पे डाला, अब उसकी पिप 40 तक चली गई है, पीप 10 तक चली गई है, मैप इज 12, रेस्पिरेटरी रेट यू हैव सेट 60, FiO2 60%. आपकी ब्लड गैस आपने कराई, दैट शोज pH of 7.22, CO2 of 70, PO2 of 40, bicarb is 21. X-ray chest shows clear lung fields और diaphragm का level at 4th intercostal space. क्या करेंगे आप? Just think about it. Participants are saying they will change mode, जैसे आपने बता दिया, वैसे उन्होंने पहले बता दिया था. They will switch to HFOV. ठीक है. अब HFO पे very good.
आप काइंडली इनसे ये पूछे कि आप HFO पे अगर आप सेट करेंगे तो क्या पैरामीटर्स और क्या वो उसकी लेंगे, उसको सेटिंग्स क्या करेंगे? नंबर 1, FiO2 कितनी रखेंगे? FiO2 100%। 100% पे कभी भी नहीं जाएंगे, 60% जितनी है उतनी सेट करेंगे। ठीक है, और कोई किसके जवाब? अच्छा, उसके बाद आप कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे? 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, FiO2, मैप, डेल्टा पी एंड फ्रीक्वेंसी। तो FiO2 आप 60% पे करेंगे। मैप कितना सेट करेंगे? मैं 14 to 15। तो ये कैसे सेट कर लिया? जो मैप है उससे 2 से 3 हायर सेट करें, क्योंकि उस पे वो कह रहे हैं कि मेंटेन नहीं करा तो ज्यादा मैप होना हो। वेरी गुड। तो ये आपका मैप है CM व्हिच इज 12। अगर 2 ऐड कर देंगे तो आपने कहा 14। लेकिन ये कैसे पता चला कि इसमें आपने ऑप्टिमल लंग वॉल्यूम जिसमें आपने बढ़ाना है मैप, या लो लंग वॉल्यूम स्ट्रेटजी रखी है? जी दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आया। मैंने ये कहा कि ये 2 हमने स्ट्रेटजीज डिवाइस की थी ना। एक स्ट्रेटजी थी लो लंग वॉल्यूम स्ट्रेटजी, जिसमें हमने उतना ही मैप रखना था जितना CMV पे था, जैसे कि कंडीशन थी न्यूमोथोरैक्स वगैरह वगैरह में ना, या पाए में। सेकंड कंडीशन थी जिसमें हमने ऑप्टिमल लंग वॉल्यूम स्ट्रेटजी, जिसमें लो लंग वॉल्यूम था और हमने ज्यादा मैप सेट करना था। तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि ये हमने ज्यादा डिसाइड रखना है इसमें? Lung inflation is compromised, so they want to keep high अगर volume. उनको डॉक्टर विक्रम, अगर उनको हिंट दें कि एक्सरे को देखें, एक्सरे की फाइंड। एक्सरे में कोई आपके पास लंग फिल्टर तो क्लियर है, ठीक है, और डायफ्राम किस लेवल पे है? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे। दैट मींस कि यहाँ पे आपके पास लंग वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा वॉल्यूम करने की जरूरत है या कम? तो यहाँ पे ज्यादा सेट करने की, ठीक है? इज दैट क्लियर डॉक्टर विक्रम? जी जी। अच्छा, अब तीसरा पैरामीटर था कि हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। आपकी आवाज इंटरप्ट कर रही है। अच्छा, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर लेंगे? फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करेंगे? 10। वेरी गुड। और नेक्स्ट वन इज द डेल्टा पी, और डेल्टा पी कितनी सेट कर लेंगे? डेल्टा पी डबल द मैप। हाँ, लेकिन डबल द इसका, मैप। जी ठीक है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या होगा? कैसे आप सेट करेंगे? क्या चीज देखेंगे, ऑब्जर्व करें? वाइब्रेशन एंड चेस्ट वॉल मूवमेंट। वेरी गुड। तो आप चेस्ट बाउंस देखेंगे एट द लेवल ऑफ चेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। सो मैप आपने 14 कर लिया, FiO2 60, फ्रीक्वेंसी 10, और डेल्टा पी आपने चेस्ट बाउंस से डिसाइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लीज अगर डॉक्टर विक्रम से आप पूछ लें, आप क्या करेंगे? एक्सरे चेस्ट एंड ब्लड गैस। वेरी गुड। हम ब्लड गैस कर लेंगे विद इन 30 to 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर, ठीक है? और ये उसकी ब्लड गैस आ गई, तो प्लीज अगर ये ब्लड गैस इंटरप्रेट करके अगला स्टेप बता दे। तो ब्लड गैस इंटरप्रेट कर ले। एक बंदा बताए, आप बताएं डॉक्टर साहब। ये मैच कर रही है नॉर्मल फिजियोलॉजी से। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि pH 7.2 से PCO2 50 होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो हमें CO2 कम करना होगा
जो भी तरीके हैं हम उसके लिए जो है फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा CO2 कम हो जाए, उससे हमारी बैक्टीरिया। नहीं, ब्लड गैस का क्या है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? ब्लड गैस इज स्टिल एबनॉर्मल, इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, But इसमें एक improved- चीज, जी एक चीज जरा फोकस कीजिए कि यहाँ पे आपकी CO2 थी 70 और 1 आवर के अंदर अंदर वो आ गई 57, ठीक है। और दूसरा अगर आप देख लें कि PO2 40 थी और PO2 55 और सैचुरेशन जो है 72% है। क्या आप 1 घंटे के अंदर अंदर CO2 से सेटिस्फाइड है या नहीं है? अगर 1 घंटे में वो 70 से 57 आ गई है तो क्या वो आप सेटिस्फाइड है इससे? Mostly are satisfied, but some are saying that we have to again repeat the blood gas and then follow what to do. So basically ये कहना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में 57, 70 से 57 is acceptable, लेकिन क्या ऑक्सीजन से आप सेटिस्फाइड है? नहीं, PO2 72 है, 55 की FI2 पे। जी नहीं, FI2 72% है, यानी FI2 60% है, PO2 55 है और सैचुरेशन 72% है। सैचुरेशन 72%। FI2 बढ़ाएंगे। तो पहले तो ये हमने देख लिया कि हम सेटिस्फाइड किससे नहीं है, ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, हम CO2 से सेटिस्फाइड है। इज दैट क्लियर? यस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा कि CMV के अंदर आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह पे इकट्ठा भी हैंडल कर सकते थे, और वो अभी आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया था CMV में कौन सा एक पैरामीटर था जो कि ऑक्सीजन और CO2 को दोनों को असरअंदाज होता था, विच इज मीन एयर प्रेशर। मीन एयर प्रेशर नहीं, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, पिप था। जो कन्वेंशनल वेंटिलेशन पे एक पैरामीटर था विच इज पिप, जो कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों पे असरअंदाज होता था। इज दैट क्लियर? मेनली यानी कि इंटरकनेक्टेड थे CMV में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल। हियर इन हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग-अलग मैनेज हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आप क्या इंक्रीज करेंगे? मैप। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब ये देखिए प्लीज दोबारा, ठीक है, सिमिलर सिचुएशन है तो आपका आंसर आएगा कि आपने हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो आप ऑब्वियसली बताएंगे कि 1 घंटे में आप ये ब्लड गैस कर लेंगे। अब काइंडली बताइए कि अब आप किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है और किससे सेटिस्फाइड? PCO2 is not improved significantly. While oxygen Saturation is improved. तो अब आप क्या कर लेंगे? डेल्टा P. So you will increase delta P, और आमतौर पे आप कितना बढ़ाते हैं डेल्टा P? by 4. So this is so simple but it need vigilance, कि आपको एक तो विजिलेंट रहना है, आपने बैठे नहीं रहना, आपने फौरन देखना है कि हमारी ब्लड गैस पे कितना असर आ रहा है, और ऑब्वियसली चेस्ट एक्सरे भी देखते रहना है, स्पेशली जो डायफ्राम का लेवल है, रिप काउंट जरूर आप देखें, ठीक है। अगला जो है ये सिनेरियो है, अगेन इसमें आप हाई फ्रीक्वेंसी पे डाल देंगे, अगेन ब्लड गैस कर लेंगे। अब काइंडली देख लीजिए कि अब क्या प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? Significant washout of PCO2. So डेल्टा P कम करेंगे। रिड्यूस डेल्टा P एंड रिपीट ABGs, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंटली लो हुआ है तो हमें ये नहीं करना कि अगले 2 घंटे बाद नहीं करानी, हमें अगले 30 मिनट में ही ब्लड गैस रिड्यूस करना, ठीक है। वेरी गुड।
So summary is, high frequency is very efficient modality of ventilation. It needs extreme degree of vigilance, that it is capable of producing extreme changes in gases very quickly. And once HFO is initiated, blood gas and X-ray are required to monitor it and make changes. CO2 and oxygen are controlled independently. Frequency and delta P usually controls CO2. MAP and FA2 are used to control oxygenation. And start weaning whenever it is indicated. Do not delay it. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sikandar. किसी का कोई सवाल हो? सर, किसी का कोई सवाल नहीं, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से समझाया है। इवन बेसिक्स से लेके ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट आपने जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन के कवर कर